क्या हुआ? अभी लिख नहीं रहा था। अभी दिख रहा है क्या बोर्ड? तो कल बेसिकली कल चेन रिएक्शन में व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए, बी एंड सी दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है, एंड वी डिराइव्ड इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। इसमें जस्ट एक आइडिया, बेसिक आइडिया, यहाँ पर ए स्पीसीज को वी जनरली कॉल पेरेंट स्पीसीज। क्या बोलते हैं? पेरेंट। बी इज नोन एज फर्स्ट डॉटर। सेकेंड डॉटर। ठीक है, पेरेंट, फर्स्ट डॉटर, डॉटर। ये आइडिया बोलना सिर्फ कल रह गया था, सो आई थॉट आई मस्ट लेट दिस लेट यू नो दिस। सो ये ए बी एंड सी के कंसंट्रेशंस कैसे ड्राइव करने हैं, दैट वी हैड डन इन डिटेल। I was discussing transient equilibrium, the condition for transient equilibrium and its physical meaning, ठीक है। ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम मैं कंटिन्यू करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज होएगा। इट्स नॉट बी बाई सी, इट्स एक्चुअली बी बाई ए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, that is for concentration of first daughter by concentration of parent, concentration of first daughter by concentration of parent, and फिर चीजें जो है वो थोड़ी सी अल्टर हो जाएंगी, it will get changed a bit. The change will be, and this one remain as it is. ये जो है this will be replaced by B is equal to concentration of E naught K1 minus K2, और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट इज प्योरली कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस K1 टी, ठीक है। एंड देन वी कैन डू सम स्मॉल मैन्यूवरिंग, एंड ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा, K1 divided by K1 minus K2, and this thing will become e to the power minus K2t, K2t minus 1, sorry, K2t e to the power minus K2 minus K1 t minus 1. Is this okay? ये चीज आ जाएगा, एंड
K2 K1 से बहुत बड़ा है, K2 K1 से बहुत बड़ा है, I mean obviously 10 times से बड़ा है ये K2, तो this thing will become 0. Is it okay? If K2 is much greater than K1, which is the case, no doubt about it, so exponential term e to the power minus this thing will become 0, or can we consider it to be 0 if this value, sorry, if this value is a large positive number, will this expression become 0? E to the power minus x, x की वैल्यू अगर 500 या 300 या 200 लेते हो, e to the power minus x, will it become 0 or not? I mean close to 0 or much lesser than 1. Yes, sir. ठीक है, the only condition is this time should be large enough, right? The time should be large enough. So for large time, e to the power minus k2 minus k1 t will tend to be 0. Therefore, concentration of B by concentration of A will become equal to K1 by, ये -1 रह जाएगा, इसको साइन चेंज कर लेंगे, K2 minus K1. Is this okay? अब इसका थोड़ा सा फिजिकल मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है? ए बी सी का अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, सो जब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो है, तो हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? ए विच इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, ठीक है, so it is going to start from some higher value and it will decay constantly and exponentially to become smaller and smaller like this, ठीक है? B का जो होगा, if we have started from small value of, I mean 0 B, it is going to look something like this. It increases, goes to a maximum, then falls back. ठीक है, और सी स्पीसीज जो रहता है, इसको दूसरे कलर से
ठीक है, ये ऐसे होता है और सी का इक्विलिब्रियम, सी का कंसंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से पिक करता है, slowly pick करता है, will eventually reach the this value at infinite time. ठीक है, ये होता है वेरिएशन ऑफ ए, बी एंड सी विथ टाइम. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? अब बेसिकली हमारा बोलना ये है, यहाँ पर ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम का मतलब, फिजिकल मतलब क्या होता है वो मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ. बेसिकली इसका फिजिकल मतलब ये होता है कि ए फॉर्म हो रहा है और ए से बी फॉर्म हो रहा है और बी से फिर सी फॉर्म हो रहा है, और K2 जो है वो ज्यादा है K1 के कंपैरिजन में. ठीक है, तो एक ऐसा कंडीशन जब A से B में कन्वर्ट हो रहा हो और इमीडिएटली B से C में कन्वर्ट हो जा रहा हो. ठीक है, अब इसमें B का कंसेंट्रेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम जो होगा, when all A, B and C are present, तो ऐसा रहेगा कि B का कंसेंट्रेशन जो होगा वो कांस्टेंट एक तरह से रहेगा. इट विल बी नॉट कांस्टेंट बट इट विल बी A and B का कंसेंट्रेशन जो होगा that will become proportional. It happens like जो B form हो रहा होगा that eventually will get converted into C. It's getting converted fastly into C. In fact, it gets converted into C. So ये जो कर्व है ना, this becomes, जैसे ही ये मैक्सिमा अटेन करने के बाद फिर इधर आता है, it becomes parallel to this curve. एक कर्व के पैरेलल हो जाता है. ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है that becomes equal kind of. So the curve start looking like transient equilibrium case में something like this. See, ये जो है वो तो अपनी तरह का ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे. However, ये जो है उसका नेचर स्लाइटली ठीक है. So this point एंड ये पॉइंट के बीच में लगभग ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं बोल सकते बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, बट दे आर ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, दे आर इनफैक्ट इक्वी डिस्टेंस. ड्राइंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है बट अदरवाइज दे आर इक्वी डिस्टेंस. ठीक है, कर्व ए कर्व बी आर गोइंग टू बी इक्वी डिस्टेंस. दैट इज व्हाट ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम मींस. और C वाला जो है अपना एज इट इज ग्राफ जो रहता है वो रहता है, इट इज गोइंग टू
be bit faster. B जितना फॉर्म हुआ थोड़ा फास्ट, ए की तरफ अप्रोच, ए के कंसंट्रेशन की तरफ अप्रोच करेगा. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. ठीक है. सो दोनों में पहले और दूसरे सिनेरियो नॉर्मल और इसमें डिफरेंस क्या है? This line has become parallel to this. That is the difference of concentration between the two species, the daughter and parent, is fixed. Or I mean, difference of concentration between the two species is almost the fixed. Okay, and their ratio is given by this. ट्रांजिएंट के पास जो नेक्स्ट केस होता है हमारे पास, दैट इज सेकुलर इक्विलिब्रियम. सेकुलर इक्विलिब्रियम में we have condition, almost similar condition with one thing. वो जो डिफरेंस है ना, that becomes much larger. ठीक है. the K1, यहाँ पर K1 जो था that is lesser than K2 by 10 था. It is now going to become, K1 is going to become much lesser than or lesser than K2 by 1000. ठीक है. This means K2 has now become much greater than, K2 has now become much greater than K1. ठीक है. If this is true, and if I'm talking about this ratio, B by A ratio, ठीक है, तो एक और सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी. ये वाला तो टर्म डेफिनेटली जीरो हो जाएगा फॉर लार्ज टाइम. -1, ये सारी चीजें ठीक है. बट सिंप्लीफिकेशन मेरा सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा. इट विल गो वन स्टेप फर्दर. व्हाट विल बी दैट स्टेप? इफ माय K2 इज दैट लार्जर देन K1, ठीक है ना, I can neglect this K1 with respect to this K2. मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास 1000 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1/1000 लिखूं या 1/999 लिखूं, it's the same thing almost. Am I making sense? But यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, तो 1/10 and 1/9 में we have an error of 10%, right? 1/9 and 1/10 में we have an error of around 10%. Do we recognize it? Yes, sir. ठीक है. तो K2 अगर 10K के बराबर है तब वो अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, बट K2 अगर 1000 K1 के बराबर हो गया या उससे बड़ा हो गया, तब हम ये पीसफुली अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं. वी कैन नेग्लेक्ट K1 even with respect to K2, right, in the fraction, and therefore the net thing will become, this will be gone and this will simply become K1 by K2. ठीक है. So let me start with physical interpretation. भी बता देता हूँ. P, first daughter by parent is equal to A naught K1 divided by K1 minus K2
So this will get cancelled. इनको divide कर लेंगे हम. So I'm going to get maybe this value k1 by k1 minus k2, and then we have already seen it, so k2 minus k1 t minus 1 for large time e to the power minus k2 minus k1 into t will tend to become 0. Also k2 is much greater than k1, therefore k2 minus k1 will eventually become equal to k2. Therefore concentration of B by concentration of A K1 by K2, यहाँ पर -1 बचेगा, ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, K2 माइनस K1, या K1 0 हो गया, ये K2 माइनस K1 K2 हो गया, तो K1 माइनस K2 विल बिकम माइनस K2 और ये -1 डिवाइड होकर के ये बन जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब हुआ K2 into concentration of B is equal to K1 into concentration of A. ठीक है, what does this mean? ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर से, K1 concentration of A minus K2 concentration of B. What is this? This is rate of formation of B, right? पुराना वीडियोस हमने जाने साथ में देखा है, आपने क्लासरूम में देखा है, ए से बी का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, बी से सी का फॉर्मेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ दी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी dB by dt जब हम लिखते हैं, that is rate of formation of B which is proportional to A, K1 concentration of A, formation of A minus rate of consumption of B. This is rate of consumption of B. That is, this is nothing but, ये यहाँ से 0 हो गया, but this is also equal to a rate of net formation of B. ठीक है, what does this mean? This simply means that rate of net formation of B जो रहेगा, that is going to be what? That is going to be 0. तो रेट ऑफ नेट फॉर्मेशन ऑफ बी अगर 0 रहेगा, तो यहाँ पर जो ये पैरेलल चल रहे थे दोनों, दिस बी विल बिकम ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट थिंग. इट विल बी अ कांस्टेंट थिंग once formed. It will remain as it is till A is consumed.
उसका एक मिनिमल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मेंटेन रहेगा, बट इट विल बिकम कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है, फिर बाद में डिके कर जाएगा. सो दिस सिंपली मीन्स द आइडिया इज the concentration of B, concentration of B becomes constant after some time till all three species present. ठीक है. If it is first order reaction तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो फिर तीनों के तीनों ऑल टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे ही till infinity time is reached. ठीक है. And तो और सेक्युलर इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ दिखता है वो कुछ इस तरह का दिखता है. पेरेंट की एक्टिविटी जो होगी दैट विल बी डिकेइंग वेरी स्लो. ठीक है. सो ये कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा इसका. ऑलमोस्ट क्लोज टू अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. विल डिके बट विल डिके वेरी स्लो. और ये क्या होता है, ये फास्ट कैचिंग करता है डॉटर में. ठीक है. इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. It keeps going on till some time, and till some time क्या, जब तक ये धीरे धीरे डिके होता रहेगा, ये भी धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आते रहेंगे. ये दोनों साथ 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 एट इनफाइनाइट टाइम पे दे आर गोइंग टू बिकम. एंड सी जो है इन द मीन टाइम वो लगभग बी का सी में कन्वर्सन जो है that will look something like this.
B की एक्टिविटी फास्ट है तो C का भी एक्टिविटी it will try to catch it up. बाद में थोड़ा स्लो हो जाएगा. It will become, it will start growing at the rate of A. And यहाँ से अब ये धीरे धीरे राइज करके A तक पहुंचेगा. That is how A, B and C are going to look like. A, B and C का concentration, time and concentration. ठीक है. So these two are conditions of secular and transient equilibrium. यहाँ पर है rate of formation of B and rate of decomposition of B are almost same, therefore its concentration will remain almost same till three species are present. ठीक है. In fact यहाँ से ना ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखता भी नहीं है. It becomes almost parallel till we have any of the A left. Yeah. This will keep rising. ये थोड़ा slowly और rise करता रहेगा. Fine. और एक चीज यहाँ से फर्स्ट ग्राफ को एनालाइज करते हैं अगर we can see that nature of B जो है, nature of concentration of B, that is like it is attaining a maximum and then starts to fall down. ठीक है. So if it is attaining maximum, then we need to know the nature of its maximum. यहाँ ऐसा ही कर्व इसका क्यों आया, तो that can be explained. So let us talk something about B. C तो continuously growing function रहेगा. C is going to be a continuously growing function. Its nature is such that it is going to be a kind of continuously growing function. ठीक है. और slow growing but growing function रहेगा. इसमें मिनिमा नहीं आ सकता है, कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आ सकता है. और बट बी वाले केस में ऐसा होता है कि it increases and then decreases, therefore there is chances of maxima. So we will consider it the concentration of first daughter B as per general expression for first for concentration of first daughter as per general expression for concentration of first daughter can be seen that it increases first, attains a maximum and then falls down. Increases first, attains a maximum
false. We can approximate the peak. We can find time required to reach this maximum concentration and referred as Tmax. ठीक है? Tmax and the maximum concentration of B, that is concentration B max. ठीक है? So concentration of B is equal to concentration of A naught K1 K1 minus K2 e to the power minus K2t minus e to the power K1t ये है. इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv dt किया हमने, तो the value is going to be A naught K1 K1 minus K2. ये टर्म्स जो होंगे they are going to become minus K2 e to the power minus minus K2t plus K1 e to the power minus K1t. ठीक है? And as per our understanding, this should be dv by the first derivative should become equal to 0 for maxima. For maxima of concentration of B, dB dt must be equal to 0 or should be equal to 0. ठीक है? So equal to 0. Therefore ये टर्म तो 0 होने से रहा, this has to be equated to 0 right now. Therefore minus K2 e to the power minus K2t1 K2t plus K1 e to the power minus K1t should be equal to 0. Rearrange कर लेंगे. We are going to get e to the power minus K2 minus K1
is equal to K1 by K2। ठीक है, इसको इधर लेते आते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा है ना, कोई इश्यू नहीं है ना? यस सर। ठीक है, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो K2 e to the power माइनस, नहीं समझ में आया? ओके, ठहर जाओ, ब्रेक कर देता हूँ। इसको इस तरफ ले करके आया। ओके, ठीक है, अब समझ गया तो फिर अब K1 e to the power माइनस K1t, और इसको मैं इस तरफ लेते हूँ, इसको मैं इस तरफ लेते हूँ, तो दिस विल बिकम प्लस e to the power minus K1t will become e to the power K1t, e to the power minus K2t divided by e to the power minus K1t is equal to K1 by K2। That implies, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो e to the power minus K2 minus K1 ब्रैकेट के अंदर में and t is equal to K1 by K2। ठीक है, इसका ln ले लेते हैं दोनों तरफ, तो it will become minus K2 minus K1 into t is equal to ln K1 by K2। ठीक है, और ऐसे बोल सकते हैं T max, और टाइम एट विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन, T max क्या डिनोट करता है? टाइम एट विच concentration of B is maximum। ठीक है, ln K1 by K2 divided by this will become K1 minus K2। ठीक है, तो दिस इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड। ये माइनस को अंदर ले लिया है तो K1 माइनस K2 हो गया। दिस इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर B to become maximum। Now the maximum concentration of B will be what? Concentration of B, या B max will simply become, I'll put T max into the expression, it will become A naught K1 by K2 minus K1, sorry K1 minus K2 into e to the power minus K2 into, this time will be put in ln K1 by K2 divided by K1 minus K2। ठीक है, this thing will be subtracted from e to the power minus
K1 into ln K1 by K2 divided by this thing divided by K1 minus K2. ठीक है, and ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखो ये कुछ इस तरह का है क्या, a to the power m into n. This can be written as, it could have been written either as this or as this, a to the power m whole to the power n or a to the power n whole to the power n. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? इंडिसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर। ठीक, सो मैं बस ये कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, इसको n बना रहा हूँ और ये पार्ट को मैं m बना रहा हूँ दोनों जगह पे। Is it okay? That's fairly possible. No issues in it. इससे मेरा इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, ऐसा नहीं किया। ये चीज कॉपी करने में थोड़ा सा देख लेना यार, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें तो समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट आप बाद में देखोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। कहीं पर अगर वैसा और कहीं दिखेगा तो यू जस्ट चेंज इट टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड नॉट। ठीक है, सो दिस विल सिंपली बिकम k1 minus k2 and इधर अंदर ब्रैकेट में I can write it as e to the power ln k1 by k2। ठीक है, ln k1 by k2 and whole to the power minus k2 by k1 minus k2। ठीक है, माइनस e to the power ln k1 by k2 and whole to the power minus k1 by k1 minus k2। ठीक है, is this okay? यस सर। अब एक और रूल इंडिसेस का हम यूज करेंगे यहाँ पर। एनी नंबर टू द पावर लॉग अगर होता है ना, लॉग ऑफ बेस
log of m. ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप अगर बनता है a to the power log with base log of m with base a, this simply becomes m. In 10 to the power log m will become m. ठीक है, similarly e to the power ln m will become m. ठीक है, this is a very well known thing, you don't have to bother about it. I think शुरू में मैंने बताया भी था आप लोगों को बेसिक मैथ्स के टाइम पर, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है. I can give 2 minutes to recap it. Suppose मैं ये बोल रहा हूँ this is going to be equal to k1 by k2 या e to the power ln m. ठीक है, ये क्या है, m के बराबर है, कुछ ज्यादा नहीं करना है. I just have to take ln on both sides. ठीक है, what will become ln e to the power ln m. ठीक है, और ये ln m हो जाएगा. अभी we know that log of a to the power x क्या होता है, x log a, ये तो पता रहेगा, हम लोगों को ध्यान रहेगा. So this will become ln m into ln, which is nothing but ये वाला टर्म जो होता है ln e is 1, so it will simply become ln m, that is LHS will become equal to RHS. That means हम ये जो ले रहे हैं this is definitely true, no doubt about it. Clear है बात Yes, समझा. ठीक है, so now I can easily write it as k1 by k2 raised to the power of minus k2 by k1 minus k2. This is minus k1 by k2 minus k1 by k1 minus. Is it okay? So this is concentration of the mass. Concentration of the mass. ठीक है, yes, sir. ये माइनस है, इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू. इससे फर्दर हम नहीं जा सकते. दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ध्यान ना भी रहे और बहुत मुश्किल नहीं है ध्यान रखना, बट हाँ ये टाइम मैक्सिमम जो है ये हमको ध्यान रहना चाहिए. दैट इज वन थिंग. द नेक्स्ट scenario we are going to discuss is equilibrium, perfect equilibrium. हाँ आई नो, 2 मिनट सिर्फ. लिंक आ गया क्या? No, sir. अभी आया नहीं है ना. लिंक आ जाए तो फिर मुझे बता देना, तब तक मैं अगला चीज जो है इक्विलिब्रियम वाला वो. नहीं, वो नहीं भेजते पिछले 2 लेक्चर से। क्या क्या, सॉरी. पिछले 2 लेक्चर से वो लिंक नहीं भेजते। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है फिर यस, चलेगा, फिर स्टॉप करता हूँ.